Good morning, everybody. Well, the problem is that now you cannot tell back good morning. Eh? आप लोग मुझसे बात नहीं कर पाएंगे अभी. अच्छा, last class we were calculating dimensions of different physical quantities. So last class we were talking of dimensions, and some of you want that I should talk in Hindi. And when I talk in Hindi, मैं जब हिंदी में बात करता हूँ तो you know something changed. I don't feel too much comfortable. Anyway, so हम लोग dimensions calculate कर रहे थे last class, and today let's try to calculate some more dimensions, कुछ more dimensions calculate करते हैं. So the first question is, find the dimensions of. Now the first question is, find the dimensions of kinetic energy. आप लोग क्या ट्राई कीजिए, dimensions of kinetic energy. So हम फॉर्मूला यूज करेंगे, we'll use some formulas, and फॉर्मूला आप सबको पता ही है, फॉर्मूला for kinetic energy, and the formula is half mv square. Kinetic energy का फॉर्मूला ये है half mv square. M is mass, v is velocity. M is mass, v is velocity. Okay, you have to find the dimensions of kinetic energy. Kinetic energy का dimensions हमको निकालना है. Kinetic energy is half mv square. ये फॉर्मूला है, आप लोग को पता ही है. जिन सबको पता नहीं है अभी आप याद कर लीजिए ये. We will learn it in some other chapters. ठीक है, अब से हमको kinetic energy का dimensions निकालना है. Kinetic energy, ये जो quantity है half, ये half जो quantity है, this is a number only. Half is a number only, and number has no dimensions. कोई भी number हो, number का कोई dimensions नहीं होता है. So number has no dimension. M is mass. Mass का dimensions होगा m, and v is velocity. Velocity का dimensions है l t minus 1. ये square है, square.
ठीक है, m is mass, velocity is dimension L, t power minus 1 square. So what you will get, m L square t power minus 2. This is the dimensions of kinetic energy. Okay, so two things you have to remember. दो चीज आप लोग को याद रखना है. Number one, if you have a number, it will have no dimensions. Number का कोई dimensions नहीं है. Any number if we have, it will be dimensionless. उनका कोई dimensions नहीं है. And number two, any type of energy, any type. It may be kinetic energy, it may be potential energy, it may be chemical energy, it may be electrical energy, any type of energy. Energy किसी भी type का हो, energy, उसका dimension same ही होगा, always. So all energy will have the same dimension, m L square t minus 2. जितना भी energy है, सबका dimension same होगा. Next one. You find the dimensions of work done. You try this one quickly. आप इसका dimensions check कीजिए, क्या कितना होगा इसका dimensions, work done का dimensions. वर्क डन का तो डेफिनेशन आप लोग को पता ही है, जिनको को नहीं है आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर आप लोग को पता है तो अच्छा है. इफ यू डोंट नो, वी विल लर्न इट लेटर. हमारे पास एक चैप्टर है वर्क डन, पूरा एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. Dimensions of work done. Don't erase it. आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए. You should be fast. Some got ML today. Okay, right. Please add me as panelist. मैं तो panelist आप लोग को नहीं बना सकता. मैं खुद भी नहीं बन पाया. आप लोग को क्या बनाऊंगा? So most of them gave the right answer. सर ये बायोलॉजी क्लास है क्या? ये कौन लिखा? आपको रूटीन पता नहीं है क्या? रुमाना सदिया चौधरी, आपको रूटीन पता होना चाहिए. और सर आप हिंदी में समझे, मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अच्छा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ये हम बाद में पढ़ेंगे. क्लास 9-10 में आप लोग पढ़ा है. एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन, किसी भी चीज मोशन में होने से जो एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं. ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर. फॉर्मूला याद रखिए. वर्क डन का डायमेंशंस कितना होगा? वर्क डन. फोर्स का डायमेंशंस क्या है? फोर्स का डायमेंशंस ऑफ वर्क डन. Last class we got the dimensions of force, m L t minus 2. Displacement का dimensions है m.
So it will be m L2 t minus 2. And work done and energy, they have same dimensions. Work done और energy दोनों का dimension same है. So work done and energy, they have the same dimensions. Work done and energy दोनों का dimensions same है. Next one, you find the dimensions of frequency. You find the dimensions of frequency. Next one, you find the dimensions of frequency. Okay, next one, you find the dimensions of frequency. Frequency. What is frequency? Frequency क्या है आप लोग ने पढ़ा होगा in class 9. Number per second, number of some events per second. किसी भी चीज एक सेकंड में कितना बार हो रहा है, that is frequency. So definition, frequency, it is 1 by time period. 1 by time period. 1 by time I am writing frequency is 1 by time. So what is the dimensions of frequency? Dimensions of frequency. What is the dimensions of frequency? Some of you, your internet, maybe Abdul Kalam, I think your internet is slow. You check your internet connection. Dimensions of frequency. Some of you have given answer, frequency. 1 by time. 1 by time matlab t power minus 1. 1 by time matlab t power minus 1, right? Nakibur Rahman, you have written s power minus 1. No, the dimension of time, it's t, capital T, not s. That one is correct. Firdaus Akram Chaudhary, yeah, you have written like this. That also you can write. That also you can write. Nakibur Rahman, you have written s power minus 1. S is second, okay, the unit. Dimension is t. You can also write it like this. आप ये ऐसा भी लिख सकते हैं. M नहीं है यहाँ, इसमें M नहीं है तो आप लिख सकते हैं m power 0. Okay, ठीक है. इसमें m नहीं है, you can write m power 0. L भी नहीं है, you can write L power 0. T power minus 1. You can write like this also. Frequency. Meaning is same. This one and this one, both of them have same meaning. आप दोनों में से किसी आप use कर सकते हैं. Both of them have same meaning. Both of them have same meaning. Next one.
Next one. You find. Next one. You find. You find the definition of torque. 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 आप लोग इसका डेफिनेशन निकालिए. I mean dimensions. torque. Torque. What is torque? आप लोग ने नहीं पढ़ा होगा. Doesn't matter. We will learn in some other class what is torque. Definition is torque. Torque equals to force into distance. Definition is torque equals to force into distance. You find the definition of torque. Okay. Okay, right. Someone has given correct answer. Someone else has given wrong answer. No, someone you are giving wrong answer. Like some are giving correct answer. Some are giving wrong answer. Some are giving correct answer. Correct answer. Many are giving correct answer. Few of you are giving wrong answer. No, this is wrong. Last one who has given, you have given wrong answer. Some of you have given correct answer. Force का dimensions लिखिए. Force का dimension याद रखने से अच्छा है. Okay. Yes, of dimensions. याद रखिए. Force. What is the dimension of force? M L T minus 2. Distance का dimension L है. Torque L2T minus 2. This is torque. Torque dimension. L2T minus 2. Torque dimensions है L2T minus 2. Many, yeah, most of them gave the right answer. Few of them you have written wrong. Few have written wrong. Most of them gave the right answer. Most of them gave the right answer. ठीक है, okay. The next one, it's very important. Next one, we want to find the dimensions of. Next one is very important. Very important. You have to find the dimensions of gravitational constant. Gravitational constant. We denote it by G, capital G. Okay, this gravitational constant we denote by capital G. This is very important. Find the dimensions of gravitational constant. Gravitational constant हम capital G से denote करते हैं. And to find, some of you may know, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशंस हमको निकालना है. उसके लिए हमको क्या फॉर्मूला चाहिए? द फॉर्मूला. वेल, वन फॉर्मूला आप लोग ने क्लास 9 में, सम ऑफ यू कुछ लोगों ने 9 में पढ़ा है, कुछ लोग में नहीं पढ़ी होगी. The formula we will use is one. F equals to G M1 M2 by R square. This formula you use. F is force. M1 and M2, they are masses. R is the distance.
Okay, find the dimensions. Yeah, some okay, right. 2-3 people आप लोग ने अच्छा correct answer दिया है. You have some of you have given correct answer. Right. Some of you have given correct answer. आपको ये फॉर्मूला अभी यूज कीजिए, याद रख लीजिए अभी. हम ये बाद में पढ़ेंगे, ये सब जितना भी हम अभी पढ़ रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग आपको ये सब याद रखना है. एक एक चीज हम लोग डिफरेंट चैप्टर में पढ़ेंगे. And you'll see that they are not tough, they are easy actually. हम जब भी different chapters में ये सब पढ़ेंगे तो आपको और भी आसानी से समझ में आएगा, याद रखने में आसान होगा. But for the time being, you just need to remember this one. If you cross multiply, G का dimensions हमको निकालना है. We'll get f r square by m1 m2. Cross multiply. You will get cross multiply f r square by m1. Then write the dimensions. Dimensions of f is m, l, t minus 2. R is L, R is distance, distance is L, L square. M1 and M2 both are masses. दोनों masses है, masses का dimension है M. One will cancel, one will get cancel. उसके बाद देखिए कितना होता है dimension. आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं. What will be the dimensions? The dimensions of G. One m will cancel. This m will go up. M power minus 1. L cube. T power minus 2. Dimensions of G is m power minus 1, L cube, T power minus 2. Okay. And this one is so important. This one, ये बहुत important है. हम बार-बार ये use करते रहेंगे. We will use it in different problems again and again. This one is so important. So you memorize this one and remember this one. Okay, this one is so important. ये बहुत important है. हम different problem में use करते रहेंगे इसको. We will use it in different problems. Okay, we will use it in different problems. So you remember this one. You remember this one. One more important, very important, one more. One more very important. You have to find the dimensions of Planck's constant. Planck's constant. हम small h से ये denote करते हैं, small h, Planck's constant. ये बहुत important एक constant है, बहुत important है.
Okay, and you want to find the dimensions of Planck's constant. So Planck's constant आप लोग में पहले नहीं सुना होगा. Planck's constant you may not have heard. फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे इसमें? फॉर्मूला ये यूज करेंगे E equals to h nu. H Planck's constant हो गया, E equals to h nu. E हो गया एनर्जी. और ये न्यू, इसको हम न्यू प्रोनाउंस करते हैं. दिस इज फ्रीक्वेंसी. इसको हम न्यू प्रोनाउंस करते हैं. न्यू न्यू. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है NU. ठीक है, ये सिंबल का प्रोनाउंसिएशन होता है न्यू. और हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे E equals to h nu. आप ये यूज कीजिए. You use this formula to find the dimensions of Planck's constant. Okay, if you get, you can some of you can type the answer. Some of you can type the answer if you get. Some of you can type the answer if you get. No. Yeah, some of them answers are correct. Yeah, correct answer. Okay, this answer is correct. Most of you are giving correct answer. Right. Right. You keep on doing. Most of you are giving correct answer. Most of you are giving correct answer. Okay. Almost all of you, those who have given answer, those who have written the answer, आप लोग ने correct answer लिखा है. आप लोग ने correct answer लिखा है. Well, E is equals to h nu. हमको ये Planck's constant का dimensions निकालना है. So हम अगर यहाँ से h निकलते हैं, h equals to E by mu. E का dimensions है m L2 T minus P. एनर्जी का dimensions है m L2 T minus 2. और न्यू फ्रीक्वेंसी का dimensions आप लोग ने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी. फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी? आप लोग ने कैलकुलेट कर लिया फ्रीक्वेंसी. इट्स t power minus 1. T power minus 1. Okay. Okay, all of you got E equals to h nu. ये फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे. आप लोग केमिस्ट्री में बहुत जल्दी ये पढ़ेंगे. Chemistry, I think structure of atom शुरू हुआ है. In that chapter you will study this E equals to h nu. Very soon you will study E is energy, h is Planck's constant, nu is frequency. So h is E by nu, cross multiply.
E M L2 T minus 2 डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन ये आपको याद रखिए, अच्छा होगा। याद नहीं रखने से भी आप लोग को आप लोग निकाल सकते हैं इसको, लेकिन याद रखिए ये सबसे अच्छा होगा। एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी T power minus 1. So what you will get, the dimensions of Planck's constant. Dimensions of Planck's constant is M L2 T power minus 1. Minus 1 ऊपर जाएगा, plus 1. Minus 2 plus 1 is minus 1. T power minus 1. This is also a very important dimension. Okay, this is also a very important dimension. M L2 T minus 1, very important. ये भी आप याद रखिए, because always it may not be possible for us to calculate this one. So if you remember this one, you will save time. In NEET, NEET, you have 1 minute for each question, so you cannot calculate too many things. आपको बहुत सारी चीज याद रखना पड़ेगा. So the dimensions of H you should remember. Dimensions of gravitational constant, dimensions of Planck's constant, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, because you cannot calculate them in NEET. You have less time. आपको बहुत कम time मिलता है, एक question में 1 minute. So you cannot. So dimensions, last class और आज के क्लास में जितना भी डायमेंशंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना भी क्वांटिटी का डायमेंशंस, यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। इसमें क्या होगा, अगर आपको ये सपोज डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट याद है तो एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं होने से क्या होगा, आपको ये डायमेंशंस निकालने में तो 10 सेकंड चला जाएगा। आपका पास टोटल 60 सेकंड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, सो 10 सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट। और एक find the dimensions of coefficient of viscosity. Okay, coefficient of viscosity. What is this? We will learn later. And in physics also we will learn. Physics में थोड़ा लेट होगा पढ़ने में, chemistry आप जल्दी पढ़ लेंगे, बहुत जल्दी. So find the dimensions of coefficient of viscosity. और coefficient of viscosity हम ये symbol से denote करते हैं. This symbol. This symbol is pronounced as eta. ठीक है? You have to find the dimensions of coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity हम यह symbol से denote करते हैं. इसका pronounce हमेशा pronounce करते हैं इसका eta, eta, eta. इसका pronunciation होता है eta. You have to find the dimensions of coefficient of viscosity, eta. अच्छा, इसका फॉर्मूला तो आप लोग को पता नहीं होगा। इसका फॉर्मूला आप लोग को पता नहीं होगा। Find the dimensions of coefficient of viscosity. The formula we will use, formula हम ये formula use कर सकते हैं, 6 pi eta RV. F equals to 6 pi eta RV. ये symbol क्या है?
प्रोनाउंसिएशन ईटा है, ईटा, इस सिंबल का प्रोनाउंसिएशन ईटा। और फॉर्मूला तो आप लोग को याद नहीं है, आप लोग ने पढ़ा नहीं है ये एक्चुअली, सो आप लोग को पता नहीं होगा, सो यू डोंट नो द फॉर्मूला, यू जस्ट यूज दिस वन। अभी याद रखने का जरूरत नहीं है ये फॉर्मूला, डोंट रिमेंबर नाउ। ये फॉर्मूला आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेट कैसा करता है ये सीखिए। यहां से आपको कैलकुलेट करना है, इसमें इस इक्वेशन में एफ हो गया फोर्स, आर हो गया रेडियस, और वी होगा वेलोसिटी। ईटा, ये जो ईटा सिंबल है, इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशंस आप लोग को निकालना है। अब ये फॉर्मूला आपको आप लोग को याद नहीं रखना है, just use this formula to find the dimensions of eta. Okay, some of you are giving the answer. Some of you are giving the answer. आपको इसका dimensions. Some of you are giving correct answer. आप लोग correct answer दे रहे हैं. Many are giving correct answer. आप लोग आंसर correct आ रहा है. You have to find the dimensions of eta. Some of the answers are wrong. Some of the answers are wrong. ऐसा एक है, कहावत है, that after finishing the Holy Bible, people ask who is Jesus Christ. बाइबल खत्म होने के बाद आप लोग पूछ रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट कौन है। So ऐसा एक सवाल किसी ने पूछा, which subject is now? Which subject is now? आपको ये पता नहीं है आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये भी पता नहीं है कि आपको F equals to 6 pi V। एटलीस्ट मेरा चेहरा जब दिखेगा तो समझ लीजिए कि मैं फिजिक्स से पढ़ा पाऊंगा। और चेहरा याद रखना बहुत इजी है, यूनिक चेहरा है मेरा, कोई भी मेरा चेहरा को याद रख सकता है। और जब भी ये चेहरा आपको दिखेगी तो आप ये समझ लीजिए कि ये फिजिक्स वाला आदमी है। well, ये हमको ईटा का डायमेंशंस निकालना है। सो इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बी f by 6 pi rv। ये होगा ओके। हम यहाँ अगर डायमेंशंस लिखते हैं, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स? फोर्स का डायमेंशंस है m l t minus 2. This is the dimensions of force. But this quantity 6 pi is a number. 6 pi is a number. और नंबर का कोई डायमेंशंस नहीं है। That is very important to remember. Number has no dimension. So ये क्वांटिटी एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशंस नहीं है। R is रेडियस, रेडियस का डायमेंशंस क्या होगा? क्विकली आप लोग टाइप कीजिए, मैं देख रहा हूँ रेडियस का डायमेंशंस क्या है, आप लोग टाइप कीजिए। रेडियस का डायमेंशंस क्या है, आप लोग सिर्फ ये टाइप कीजिए, रेडियस का डायमेंशन क्या है। क्विकली रेडियस, सिर्फ रेडियस का डायमेंशन टाइप कीजिए। नहीं, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, ओनली रेडियस का डायमेंशन। आर जो है रेडियस, आर इज रेडियस, उसका डायमेंशंस क्या टाइप कीजिए क्विकली। राइट 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 राइट, ओके ओके ओके, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, मैं समझ गया, मैं समझ गया। What's the dimensions of radius? Many of you have written it's l length, radius length होता है। और वेलोसिटी तो हम लोग ने पहले बहुत बार कैलकुलेट किया, e power -1, l t power -1 वेलोसिटी का डायरेक्शन।
One L will cancel. One L will be left here. It will go up as L power minus 1. T power minus 1 will go up as plus 1. Minus 2 plus 1 is minus 1. So from here we get the dimensions of theta is M. L minus 1, T minus 1. This is the dimensions of theta. ये क्वांटिटी आप लोग अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं खुश हो जाऊंगा आप लोग याद रखते हैं। आप लोग अगर याद नहीं रखते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है। लेकिन लास्ट क्लास और आज के क्लास हम लोग जितना भी डायमेंशंस कैलकुलेट किया है, अगर आप ये सब डायमेंशंस याद रखते हैं वो सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको याद रखने का जरूरत ही नहीं है किसी भी क्वांटिटी का। इतना डायमेंशंस अगर आप लोग याद रखते हैं देन इट इज सफिशिएंट। हम लोग ने पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज देखा, इन सब का डायमेंशंस क्या है वो हम लोग को पता है। उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जितना भी क्वांटिटीज होगा सब डेराइव्ड क्वांटिटीज होगा। और डेराइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशंस कैसा निकलता है ये हम लोग को पता चल गया। व्हाट वी विल डू, वी विल क्या करेंगे हम लोग, राइट द फॉर्मूला। हाँ, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले और फॉर्मूला में डिफरेंट क्वांटिटीज का डायमेंशंस हम निकाल के हम डायमेंशंस उन क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। Now, one question you may ask, why do we need to find dimensions? One question you may ask that why do we need to find the dimensions? हम लोग क्यों dimensions चाहिए हम लोग को? So actually क्या है? Why do we need the dimensions? Why do we need to find the dimensions? There are many reasons. First thing is that we can check the validity of an equation. एक इक्वेशन हमने लिखा, वो इक्वेशन गलत है कि सही है, हम लोग डायमेंशन से चेक कर सकते हैं कि whether the equation is correct or not. अगर करेक्ट होता है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होगा, करेक्ट नहीं होगा तो डायमेंशन सेम नहीं होगा। बहुत सारे इक्वेशंस ऐसा है that we cannot derive them. We can only find them by using dimensional analysis. ये सब हम बाद में देखेंगे, next class probably what we can do. Next class we will see what we can do. But in exam, especially in NEET and JEE, you don't get kind-hearted people like me. मेरे जैसा दयालु आदमी आप लोग को नहीं मिलेगा। So people will put a twist in the question. Question में थोड़ा twist डाल देगा. They won't tell you directly a quantity. Say in exam people may not tell you to find directly that you find the dimensions of force. ये नहीं भी पूछ सकता है. People will not ask directly that you find the dimensions of force. They may change slightly. तो हम लोग को कुछ ये सब प्रॉब्लम के लिए हम लोग को कुछ याद रखना पड़ेगा, टेक्निक। हम लोग को कुछ टेक्निक याद रखना पड़ेगा, because people will not ask directly to find dimensions of quantity. The technique हम लोग को याद रखना पड़ेगा. If you see a rate of a quantity, in the question, some example I'll give. Then what we will do, that quantity we will divide by the dimensions of length. Time. Quantity will divide by the dimensions of time. I'll explain. You just note it like this, If you see rate of a quantity, rate of a quantity, तो हम क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को टाइम का डायमेंशन से हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है, you copy this one, you copy this one.
If you see rate of a quantity, तो हम क्या करेंगे, उस quantity को time का dimension से divide करेंगे. If you see gradient of a quantity, gradient of a quantity, okay, if you see gradient of a quantity, तो हम क्या करेंगे, उस quantity को length का dimension से divide करेंगे. Quantity will divide by the dimensions of length. Okay, समझ में आया आप लोग को? If you see rate of a quantity, तो उस quantity को हम time से divide करेंगे. If you see gradient of a quantity, then that quantity will divide by the dimensions of length. And if you see this one, moment of a quantity, moment of a quantity. If you see moment of a quantity, then that quantity will multiply by the dimensions of length. ठीक है? If you see rate of a quantity, वो quantity को हम time से divide करेंगे. If we see gradient of a quantity, क्या करेंगे हम? Quantity को length से divide करेंगे. If we see moment of a quantity, quantity को हम क्या करेंगे? If we see moment of a quantity, moment quantity को हम length का dimension से multiply करेंगे. आप ये कॉपी कर लीजिए, then I'll explain. As an example, एक example मैं आपको दे रहा हूँ. As an example, आप लोग थोड़ा जल्दी कॉपी कीजिएगा. As an example, say find dimensions of volume rate of flow. Okay, as an example, ये एक example है that you find dimensions of volume rate of flow. ये dimensions इसका निकालना है. So इसमें quantity क्या है? आप देखिए, quantity है volume. Volume is the physical quantity. ठीक है? Here volume is the physical quantity. Find dimensions of volume rate of flow. Volume is the physical quantity here. ठीक है? Here volume is the physical quantity. And since rate is mentioned, तो हम क्या करेंगे? Volume rate. इसका मतलब क्या है? Volume. उसको हम time से divide करेंगे. Dimensions. Volume is the physical quantity. You understood? Suppose you are asked, find the dimensions of volume rate of flow. Find the dimensions of volume rate of flow. इसका मतलब क्या है? Volume is the physical quantity. और उसके साथ, since rate is associated with it, we'll have to divide by it.
Okay, so वॉल्यूम का डायमेंशंस क्या है बताइए क्विकली. Volume of anything will have the same dimensions. Okay, volume of anything will have the same dimensions. Volume का dimensions होगा L cube time का T, L cube by T. या हम ऐसा लिख सकते हैं L cube T power minus 1. This is the dimensions of volume, rate of flow. I hope you understood. Another example, another example. एक और example हम देखते हैं. Find the dimensions of another example. Moment of force. Moment of force. Another example. Find the dimensions of moment of force. Moment of force का क्या dimensions है ये हम calculate करेंगे. Okay. Moment of force का क्या dimensions है ये हम लोग calculate करेंगे. Find the dimensions of moment of force. इसमें देखिए, physical quantity is force. Okay, yeah, physical quantity is force. And since moment is associated with force, moment का मतलब क्या है? हम क्या करेंगे? Moment का मतलब? What does moment mean? We'll have to multiply by the dimensions of length. So moment of force. Quantity is force. So हम क्या करेंगे? Force को multiply by dimensions of length. Moment of force means force. We should multiply by dimensions of length. Okay, and force is M L T minus 2. Length is L. So it will be M L2 T minus 2. I hope you understood, all of you understood. किसी को कोई questions है, you can type the question. आप लोगों का अगर कुछ भी question है तो आप type कर सकते हैं. Okay. आपको question है, question से आप type कर सकते हैं question. Okay. Then you try this one. आप लोग ये try कीजिए. Find the dimensions of. आप ये try कीजिए आप लोग. Find the dimensions of temperature gradient. Temperature gradient. Find the dimensions of temperature gradient. क्या होगा? हाँ, some of you are answering. आप लोग आंसर कर रहे हैं. जल्दी जल्दी में आंसर क्या है? Sajjad Alam Bashkar, you have told, sir, please explain it again. Which one I'll explain? You have not told which one.
Acha, one question, why plane angle and solid angle are dimensionless? Angles are always dimensionless. You cannot express in terms of L, ML, and T. Huh? No, this one is wrong. Someone has written L, ML power minus 1, K power 1 T. That is wrong. That is wrong. ये सब एग्जांपल किसका है? ये मेरा एग्जांपल है, इसमें क्या है? K, this is correct. This is correct. KL power minus 1 you have written. That is correct. KL minus 1, KL minus 1. Okay, right. आप लोग ने बहुत अच्छा आंसर दिया. Most of you. Okay, no need to answer more. You have given correct answer. आप लोग ने अच्छा आंसर दिया है. सबने सही आंसर दिया है. And the participation was good. Answers were good. You have to find the dimensions of temperature gradient. Temperature gradient. इसका डायमेंशंस हम लोग को निकल रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट और इसमें क्वांटिटी है टेम्परेचर द फिजिकल क्वांटिटी इज टेम्परेचर और ग्रेडियंट इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर ग्रेडियंट इसका मतलब क्या होगा कि हम टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे बाय द डायमेंशंस ऑफ लेंथ टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे बाय डायमेंशंस ऑफ लेंथ. What is the dimensions of temperature? Temperature is a fundamental quantity. Length is L. Temperature is a fundamental quantity. Don't write capital T. One or two I have seen you have written capital T. Capital T is not the one. Temperature का dimensions क्या है? हम लोग ने पढ़ा था last class में. It's capital K. Kelvin. Temperature का unit है Kelvin और इसका dimensions है K. So हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L power minus 1 K. 1 by L मतलब L power minus 1. L power minus 1 K. मोमेंटम आप लोग को पता है मोमेंटम okay, yes sir, okay, right, momentum सबको पता है. You find the dimensions of momentum dimensions of momentum quickly momentum का dimensions लिखिए quickly, all of you know momentum MLT minus 1. MLT minus 1. अच्छा आपने हम लोग को परमिशन दे दिया क्या? No sir, I am the host now. अच्छा नहीं, वो आप ज्यादा यूज मत कीजिए, फिर बंद कर देगा आपको. ज्यादा यूज करने से दूसरों का डिस्टर्ब होगा और आप लोग को ये बंद कर देगा, इसलिए आप लोग ज्यादा बात मत कीजिए. Okay. मोमेंटम का डायमेंशंस M L T minus 1. That is the dimensions of momentum. M L T minus 1. You find this one. Find the dimensions of. अब लोग ये प्रॉब्लम है. मोमेंटम वो प्रॉब्लम नहीं है. मैंने ऐसे ही पूछा आपको. Momentum is not the problem. I was just asking. And almost all of you gave the correct answer. I'm so happy that almost all of you have the correct answer. The actual thing is that in physics, actually it's to learn physics पढ़ने के लिए हम लोग को interaction होना चाहिए, two-way interaction. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बताया आप लोग ने सिर्फ सुना, आप लोग सीख नहीं पाते.
So when physical classes start, I think we will have interaction. Physical class, offline class जब शुरू होगा तो हम interact करेंगे एक दूसरे से. उसमें क्या होगा, आप लोग का समझ में ज्यादा समझ में आएगा. अभी हम जो कर रहे हैं is only to keep you engaged. हम यहाँ जो कर रहे हैं, you'll have to practice them, you'll have to study them, you'll have to revise them. आप लोग को एक assignment मिला, yes or no? आप सेकंड वाला असाइनमेंट मिल गया क्या? एक तो असाइनमेंट पहले दिन मैंने दिया था 1 2 3 4 लेक्चर का, वो आप मत कीजिए अभी. कल कुछ असाइनमेंट मिला आप लोगों को? डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ऐसा कुछ मिला? नहीं मिला? ओके, आज मैं ओके, I'll tell them to give you today. आज मिल जाएगा आप लोग को. एक असाइनमेंट में आप लोग को दे दूंगा, वो आप ट्राई कीजिएगा. अभी आज मिल जाएगा, आज शाम को आप लोग ट्राई कीजिए और मेरा विश्वास है कि आप लोग वो कर पाएंगे. ओके, सो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, कुछ पूछा था क्या? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. Find the dimensions of rate of change of momentum. Right. नो, फर्स्ट 4 लेक्चर क्या करना है वो आप कुछ दिन बाद में ट्राई कीजिए, और जो हो सकता है ट्राई कीजिए. आपको सब नहीं आएगा, लेकिन सेकंड वाला जो मिलेगा आपको वो आ जाएगा. ये करेक्ट है, ओके, इट्स राइट. ये आंसर जो आपने दिया वो राइट आंसर है. नहीं, आपने गलत आंसर लिख दिया. यू ट्राई, यू हैव रिटन रॉन्ग आंसर. और एक दो आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी में आना चाहिए. एक दो आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी. हाँ, नहीं, आपने रॉन्ग आंसर दिया, ये रॉन्ग आंसर है. हाँ, ये राइट आंसर है. ये तो राइट आंसर होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये मेरा नाम है. ठीक है, ठीक है. many of you have given right answer, few of you have given wrong. आप तो ट्राई कीजिए. ये रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग आंसर, ये भी रॉन्ग आंसर है. आप लोग देखिए, यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये रॉन्ग आंसर, ये राइट आंसर है. ये राइट आंसर, दिस इज राइट. आप लोग को क्या निकलना है? रेट ऑफ, ये राइट आंसर, ये रॉन्ग आंसर है. लास्ट वाला जो जिसने आंसर दिया रॉन्ग आंसर है. ठीक है, चलो, ओके, नो प्रॉब्लम. We want to find the dimensions of rate of change of momentum. इसका डायमेंशन हम लोग को निकलना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इसमें देखिए क्वांटिटी है मोमेंटम, ठीक है. इसमें क्वांटिटी है मोमेंटम, और उसका रेट ऑफ चेंज निकलना है. रेट आया, उसका मतलब है कि we will divide momentum by the dimensions of time. Rate of change of momentum, इसका मतलब है momentum we will divide by the dimensions of time. momentum को हम time के dimensions से divide करेंगे, और dimensions of momentum को आप लोग ने लिख लिया. So the dimensions of rate of change of momentum. मोमेंटम का डायमेंशन आप लोग ने लिख लिया m/l/t-1. टाइम का डायमेंशन है t, सो इट विल बी m/l/t पर कितना होगा? ये ऊपर आएगा, -2 हो जाएगा. दिस इज द डायमेंशंस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम.
जब भी आप डायमेंशंस लिखेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, आप लोग भूलना मत। वंस यू आर एक्सपर्ट, आप लोग जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देने से भी होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग यू पुट इट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट. Next you find, next आप try कीजिए, find the dimensions of, अब try कीजिए pressure gradient. Dimensions of pressure gradient. Here try कीजिए, find the dimensions of pressure gradient. Find the dimensions of pressure gradient. प्रेशर का डायमेंशन हम लोग ने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया, प्रेशर का डायमेंशन लास्ट क्लास में हम लोग ने कैलकुलेट किया. ओके, प्रेशर का डायमेंशंस, और हम प्रेशर ग्रेडियंट करेंगे. हाँ, प्रेशर का डायमेंशंस तो ठीक है, लेकिन दिस इज करेक्ट, द सेकंड वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट. दिस इज करेक्ट, राइट, आपने करेक्ट आंसर दिया. राइट, आपने करेक्ट आंसर. ओके ओके, correct answer. Most of you are giving correct answer. Most of you are giving correct answer. ठीक है, ठीक है. Most of you are giving correct answers. So pressure gradient, इसका dimensions. यहाँ quantity हो गया pressure. Pressure gradient, उसका dimensions. So pressure is the quantity. Gradient means you have to divide by dimensions of length. Okay, dimension has pressure gradient means pressure divided by dimensions of length. Dimensions of pressure, what is the dimension? Dimensions of pressure. M, L power minus 1, T power minus 2, length is L. M, L power minus 2, T power minus 2. M, L power minus 2, T power minus 2. So many of you have given the right answer. Good student. And you know, earlier I was working somewhere. इससे पहले मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ स्टूडेंट को तो इतना अच्छा आंसर कभी भी नहीं दिया है. But still, most of them got good marks in physics at the end of the course. So I think you have the potential. You can score more than 150 out of 180 in NEET. आप लोग more than 150, so keep it up. आप लोग को क्या है कि in the right way you need to prepare. From my experience, I'm telling you that मैं पहले जहाँ भी काम कर रहा था उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था. They cannot answer this thing. Most of you are giving right answers. So I'm so happy. Most of you are giving right answers. I'm so happy. लेकिन पहले मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ इतना आंसर नहीं दे पाया था. फिर भी they have tried. So आप लोग को क्या करना है, right direction में पढ़ना है. What to study, that is not important. That is what I always tell. क्या पढ़ना है ये important नहीं है, कैसा पढ़ना है वही important है. और जहां मैं कहूँ कि आप ये याद रखिए
यू रिमेम्बर इट, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। इसमें क्या होगा, नहीं रखने से क्या होगा, वो प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं रखने से क्या होगा यार। सपोज मैंने कहा कि आप ये याद मत रखिए, इसको याद मत रखिए, जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशंस याद रखना चाहिए। अगर आप याद नहीं रखते, सपोज एग्जाम में एक प्रॉब्लम में आपको उसका डायमेंशंस लिखना है, तो पहले आपको उसका डायमेंशंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, आपका टाइम जाएगा। So फोर्स का डायमेंशन हम आप देख रहे हैं कि फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, ऑल दिस थिंग वी आर यूजिंग अगेन एंड अगेन। ये तो शुरुआत है, हम लोग कितना यूज करेंगे ये सब का डायमेंशंस। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा बैठ के। यू विल हैव टू डिराइव, यू हैव टू फाइंड आउट, उसमें टाइम जाएगा। और नीट के लिए रिमेंबर, फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव ओनली 1 minute, यू कैन नॉट स्पेंड टाइम इन डिराइविंग समथिंग। हाँ, सम टीचर में टेल यू दैट आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। ये कोई कुछ टीचर है, आपको ऐसा बोल सकते हैं कि आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, वो सच है। बट if you don't remember, you cannot save time, you cannot solve the problem within the given time, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, so आपको डेंसिटी पता होगा, सबको जितना भी है, all of you know density। हाँ, लास्ट डे किसी ने इसका हिंदी मीनिंग और असमीज मीनिंग और बंगाली मीनिंग भी बताया डेंसिटी का। एक बार फटाफट आप लोग डेंसिटी का डायमेंशंस लिखिए। हाँ, डेंसिटी फटाफट इसका डायमेंशंस लिखिए आप quickly in the chat box। I want to see what you write quickly। आप वो पावर्स और लिखने का जरूरत नहीं है। सपोज m के बाद कितना होगा, l के बाद कितना होगा, t के बाद कितना होगा, वो लिखिए क्विकली। ठीक है, ओके, great। So many people are giving right answer, so many people are giving right answer। अच्छा, आप लोग आंसर देने के बाद आंसर कैंसिल कर सकते हो क्या? Most of you are giving right answer। I'm so happy। आंसर देने के बाद आप लोग आंसर कैंसिल कर सकते हो क्या? कैंसिल कर दीजिए सब, जितना भी आंसर दिया सारे के सारे सब आंसर कैंसिल कर दीजिए। हाँ, सारे के सारे सब आंसर कैंसिल कर दीजिए, जितना भी दिया है सब कैंसिल कीजिए। सब में ये क्या, हाँ, ओके। आप लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, स्मार्ट पीपल। Now what you do, you find the dimensions of number density। Number density। Number density you write, yes, density आप कैसा लिखते हैं? डेंसिटी फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी का मतलब है, नंबर डेंसिटी इसका मतलब है नंबर बाय वॉल्यूम। So quickly find the dimensions of number density। डेंसिटी का मतलब है मास बाय वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर बाय वॉल्यूम। quickly find the dimensions। आप लोग टाइप कीजिए क्विकली कितना होगा उसका टाइप कीजिए आंसर। Density is mass by volume, number density is number by volume। एक ही आदमी ने दिया है आंसर, आप लोग बाकी सब क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हाँ, एक
दो आदमी ने दिया है, बाकी सब क्या है? जल्दी जल्दी दीजिए, हाँ हाँ, राइट राइट राइट, जल्दी जल्दी कीजिए। ये क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। नंबर आ रहे, नंबर ऑफ डेंसिटी नहीं है, नंबर डेंसिटी है। ऑफ आप बीच में से हटा दीजिए। नंबर ऑफ डेंसिटी नहीं है, नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर बाय वॉल्यूम। ओके, ठीक है, ओके, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर। आप लोग आंसर मत दीजिए, वो हटा दीजिए आंसर। जो भी आंसर दिया है आप लोग हटा दीजिए और आंसर मत दीजिए। हाँ, मोस्ट ऑफ यू का हम लोग को नंबर डेंसिटी का डायमेंशंस निकालना है। नंबर इज डायमेंशनलेस। नंबर का कोई डायमेंशंस नहीं है, नंबर इज डायमेंशनलेस। वॉल्यूम का डायमेंशन है एल क्यूब, सो इट इज 1 by एल क्यूब, सो इट इज एल पावर माइनस। समान रो, किसी एक ने लिखा है नंबर ऑफ डेंसिटी, ये गलत है, नंबर ऑफ डेंसिटी नहीं हो सकता है। ये ऑफ ने सारा मीनिंग चेंज कर दिया। So you should be careful. Slight change changes the whole meaning. ये ऑफ नहीं है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर को हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। जैसा डेंसिटी का मतलब है हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। दैट इज डेंसिटी, वी डिवाइड मास बाय वॉल्यूम। सो नंबर डेंसिटी वी डिवाइड नंबर बाय वॉल्यूम। अगर आपको एनर्जी डेंसिटी पूछते हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी डेंसिटी, आप समझ सकते हैं ये क्या हो सकता है? एनर्जी डेंसिटी, नंबर डेंसिटी क्या हुआ? नंबर बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब है एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी बाय वॉल्यूम, ठीक है। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाय वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी नंबर बाय वॉल्यूम। और इसका डायमेंशंस क्या है? क्विकली देखिए, मैं चेक करता हूँ आप लोग लिखे टाइम उसमें। हाँ, राइट राइट राइट, हाँ आप लोग तो अच्छा ही लिख रहे हैं। ओके, मैं डिलीट क्यों किया? मैं तो एक को देखना चाहता हूँ। ओके, राइट, ओके, राइट राइट, ओके ओके, यू कैन डिलीट नाउ। आप लोग ने सही लिखा है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम। सो एनर्जी का डायमेंशन है m L2 T minus 2 by volume is LQ m, it will be L power minus 1 T power minus 2. Well, I think we'll stop here today. आप लोग को एक डीपीपी आज हम भेज देंगे इन द ग्रुप। ऑल ऑफ यू आर इन द ग्रुप, ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आप वो डीपीपी का इधर प्रिंट ले लीजिए या तो वो सब क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए और यू सॉल्व देम, यू कैन सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। आप लोग ने तो जैसा जिस तेजी से प्रॉब्लम सॉल्व किया तो मुझे लगता है कि आप सब सॉल्व कर पाएंगे। यू सॉल्व ऑल ऑफ देम एंड इन द रेस्पेक्टिव सेंटर व्हेरेवर इज अवेलेबल यू कैन शो देम। Okay, so we will stop here today. Thank you so much. Thank you, everybody.